So after a hectic December, we had a webinar, 4 days of webinar. We did, there was a Delhi conference, so presented a case there. Yesterday had a interesting seminar on ADHD, and today a YouTube live. So I think this is the last YouTube live of the year. No, I think one Saturday would come. One more Saturday would come. So let us start our YouTube live. I hope everybody is online. And today, before I start discussing a case, let us see, there were few unanswered questions on Instagram last time or YouTube. I don't remember. So if you have those questions, you can always ask. Otherwise, हम फिर से शुरू कर देंगे हमारा YouTube क्वेश्चन आंसर सेशन. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि हमको बहुत लोग ने पूछा था कि आप रूब्रिक्स कैसा लेते हैं, आप सिम्टम कैसा लेते हैं, आप सिम्टम पूछते कैसा है. नाउ सी व्हाट हैपेंस, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं कि भाई हम जब केस लेने बैठते हैं तो हमको यही पूछना है और यही करना है. इट डिपेंड्स के जैसे हनीमैन साहब ने बोला कि यू हैव टू बी एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर. मतलब आप कुछ सोच के केस टेकिंग शुरू मत कीजिए. जैसे जैसा केस टेकिंग आगे बढ़ता है ऑटोमेटिकली हमको पता पड़ता है पेशेंट को क्या पूछना चाहिए एंड क्या नहीं पूछना चाहिए, एंड डिजीज में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. एंड ऑफकोर्स अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर रिजल्ट्स बेटर आएंगे, आप बेटर लोगों को प्रिस्क्राइब कर सकेंगे. अब जैसे किसने मुझे बताया था, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर यासीन या डॉक्टर बाबल, हेलो. somebody had asked me, के what are some angry remedies. एंग्री रेमेडीज कौन कौन से होती है, गुस्से वाली रेमेडी कौन सी होती है. सी एंग्री रेमेडी, देर आर लॉट एंड लॉट्स ऑफ एंग्री रेमेडी. बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई एंग्री, बहुत ज़्यादा एंगर, इतना ज़्यादा गुस्सा के बाद फेंक फाक करेगा, चिल्लाएगा, सब करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉयलेंट एंगर. और ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक कि भाई जो बहुत सप्रेसिव है, जो आदमी बोलते नहीं है, गुस्से दबा के रखते, वो गुस्से वाला नहीं हो सकते. इट इज़ नॉट लाइक दैट. बट इट इज़ सीन वेयर, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी स्टेफिस एग्रिया. स्टेफिस एग्रिया में हमें पढ़ाया गया है कि भाई द एंगर इज सप्रेस्ड. पेशेंट गुस्से में बोलता नहीं है, ही डज नॉट स्पीक इन एंगर, ही डज नॉट स्पीक, ही बिकम्स नम, देयर इज ट्रेमलिंग गोज इन द रूम, एंड इन द रूम इन जम से दरवाजे को पटकेगा, एक लात मारेगा, चेयर को लात मारेगा, ये सब रहता है एंगर में. तो स्टेफिस एग्रिया भी रेमेडी आएंगी वॉयलेंट एंगर के अंदर. ओके, हाइपर, आई जस्ट फिनिश द एंगर फर्स्ट. So Staphylococcus aureus is also a remedy for violent anger. Of course, Nux vomica is there, nitric acid is there, tarantula is there, anacardium is there. But सबके anger निकलने के तरीके, the different release of anger is very very important. For example, I told you about Staphylococcus aureus. Though the patient is suppressive, but he releases anger in some or the other way. One question from Dr. Pandey: small hard tumor on right side of gum in a 55-year-old man. Please help. Now see, whenever you get this type of symptom, okay, there is a tumor in the gum. अब then you have to be very specific. ट्यूमर किस प्रकार का है, पेनफुल है, पेनलेस है, डिसकलरेशन है, उसके अंदर कोई सेंसेशन है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट डिफाइन द ट्यूमर. But simple, if you want to ask me the remedy, that there is in tumor, there is inflammation, there is pain. So you have to differentiate that, because if you ask tumor, मतलब क्या, उसके अंदर कोई भी पेन नहीं है, बिल्कुल पेनलेस है, वो ऐसा हम सोच सकते हैं. So whenever there is a tumor and it is painless, it is movable in the gum, you may think about natrum sulf, you can think about silicea, you can think about Staphylococcus aureus, or you can think about nitric acid. These are the remedies you must think about. Hypertension immediately after eating, not relieved by antihypertensive medicine. Yeah, so this is again a very very important symptom, Dr. Yasin, कि भाई hypertension immediately after eating. You can say that after eating, you see, then you have to be very generalized in your prescription. जब भी पेशेंट बोलता है, whenever the patient comes and tells you कि खाना खाने के बाद मेरे को बीपी होता है, मेरे को पेट दुखता है, मेरे को चक्कर आते हैं, lot of symptoms. So whenever the patient is talking about after eating there is a problem, especially hypertension, you will be surprised. The remedies are very very simple. Natramur is there, Nux vomica is there, Calibicrom is there, Calicarb is also there. But let me add one point, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पेशेंट ने बोला कि मैं थोड़ा भी खाना खाता हूँ
बस एक घास खाना खाए मेरे को तकलीफ बढ़ जाती है, स्पेशली हाइपरटेंशन और पेन इन द एब्डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ना, कितना खाना खाने के बाद। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज लाइकोपोडियम, फास्फोरस, सल्फर, ऑफ कोर्स चाइना भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कितना खाने के बाद। दूसरा सिम्टम भी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर यासीन, कि मैं जब बहुत खाना खाता हूं, व्हेन आई ईट टू मच, then I have hypertension, then I have pain, then I have this problem. Then you have to think about Naxomica, pulsatilla, endim crude, carbohydrates. So ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि आपने तो देख लिया, यू हैव सेड ईटिंग, देन ट्राई टू डिफाइन दैट ईटिंग। ईटिंग अ लिटिल एग्रेवेट्स, ईटिंग टू मच एग्रेवेट्स, ईटिंग वेरी फास्ट एग्रेवेट्स। ये सब भी सिम्टम आपको जानना बहुत जरूरी है। सो दिस आर द रेमेडीज, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, यस, वेरी नाइस। सो लेट अस डिस्कस द डिफाइनिंग सिम्टम ऑफ द पेशेंट। थोड़ा भी खाना खाता हूं मेरे को तकलीफ पड़ जाती है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे वर्टाइगो हो, चाहे हाथ पैर में दर्द हो, चाहे सिरोसिस का पेशेंट हो, चाहे हेयर फॉल हो, चाहे माइग्रेन हो, थोड़ा सा, लिटिल, एंड देन द रेमेडी इज lycopodium, phosphorus, Naxomica, sulfur and China. So much so that after overeating also Naxomica is there. After overeating Naxomica is there, pulsatilla is there, sulfur is also there. But little eating, think about lycopodium, think about phosphorus, think about China. Okay, Dr. Yasin, I hope I have answered your question. Let us go further. और जाएंगे आगे हम। समझे आपको, जब भी आपको कोई चीज समझ में आती है तो जस्ट थम्स अप दीजिए, सो आई नो दैट जो मैं बताना चाह रहा आपको समझ में आ रहा है, दैट आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो वील गो, नो सी, after, if you want exactly everything after eating, then you can see there are everything which is there after eating. Headache after eating, eye pain after eating, ear pain after eating, stomach ache after eating. There are a lot of things. So if you say hypertension, these are the most common remedies which I have prescribed in my practice. Okay, so let us go further. Okay, so I'll just have one thing more about eating, because there are no other questions on the YouTube. Eating, especially the patient says that whenever I eat, I had a case where the patient told कि जब भी मैं खाना खाता हूँ मुझे फीवर आ जाता है. Very very, what you call unique symptom, that after eating he gets fever. Now sometimes a patient will tell you about a very very unique symptom. After eating there is fever. So the remedies, there are a lot of remedies, but I prescribe the patient a single dose of bryonia on other symptoms. But when I read bryonia, it was written in bryonia that after eating there is fever. Such an important symptom in the repertory: bryonia, causticum, lachesis, lycopodium. Okay, so just I was left axillary tumor, soft to touch. Whenever you have axillary tumor, I have also a lot of cases, but let me be very frank कि मेरे पास भी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, बट जो रिजल्ट्स मुझे आए हैं वो दवाई के नाम आपको बता देता हूँ. द रेमेडीज आर लैपिस एल्बा, फाइटोलेका, कोनियम, एंड समटाइम्स आई यूज हुआंगनांग. Yes, thank you, Dr. Yasin. Mahesh, 41 years, whenever he eats banana, peanut, he gets sore throat, running nose, please help. See, whenever you are taking a very precise symptom like banana or peanut, which I have never prescribed, कि भाई किसी को बनाना खाने से तकलीफ हो रही तो क्या, तो you can take the rubric easily catches cold. Easily catches cold, and then you have lot of remedies. You can prescribe arsenic, you can prescribe Naxomica, you can prescribe Orendo, you can prescribe histamine, you can prescribe these type of remedies, Sabadilla. These are the remedies which I prescribe frequently. But precisely banana and peanuts I have never prescribed, because if you have to take a whole prescription, just easily takes cold by eating cold things, then the remedy are what I have explained to you. Okay, so ये important है. अभी हमने देखा ईटिंग के लिए, कभी कभी पेशेंट बोलता है कि जब भी मैं कुछ खाता हूँ जब भी मैं कुछ खाता हूँ मेरे को खांसी बहुत बढ़ जाती है, डॉक्टर साहब खांसी बढ़ जाती है. बहुत ड्रग्स है हमारे पास, लेकिन पेशेंट ने बोला जब भी मैं बहुत फैटी फूड खाता हूँ. क्या फैटी फूड? मैं पिज्ज़ा खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, चॉकलेट्स खा रहा हूँ, बटर खा रहा हूँ, फैटी फूड जब भी खाता हूँ तब मुझे बहुत खांसी आती है. जस्ट क्योर्ड अ केस, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर. 2 remedies you have to remember. Of course, everybody knows pulsatilla, but my dear doctors,
think about ipecac also. Ipecac में भी classical symptom है eating aggravates, especially fatty food. You know, this is a very very important. This is a very very important rubric, eating, because the patient will never miss this type of aggravation. How do you deal? How to deal with case of keloid? Very difficult and slowly. Yes, Dr. Ital, बिल्कुल मैं आपके साथ में सहमत हूँ. I am also with you. There are a lot of cases of keloid which I am also treating. There is recovery, but the recovery is very very slow. For that, I would suggest you to use the LM potency, the 50 millisecond potency. Did you attend my 50 millisecond potency lecture on in December? In December I completed 50 millisecond potency, and if you have attended that I have explained in detail why and how 50 millisecond potency has to be used. In this case, if you use 50 millisecond potency, because you can repeat, and in these cases we have to repeat because it requires repetition. That's why 50 millisecond potency is very very important. Second thing, constitutional medicine is also very very important. That is, you have to think about that in repetition. There are some remedies which are very very commonly used in our practice, and which everybody knows that, and everybody should think about those remedies. If you are not understanding the case, if you have not got the remedy right, then you have to think about that remedy. And that is, first is theosinaminium mustard seed. Second, again very very important, graphitis. Third, Cilicia. Fourth, Lapis alba. These are the very very common remedies which you have to repeat in LM potency. I have a case of beautiful keloid, butterfly keloid. That patient had lot of pus in that keloid. Of course, I started with Cilicia and the pus was much better. Then I continued theosinaminium in LM potency, and the patient is much better. Why do I say much better? Because the cure of keloid is from center to periphery. बीच का keloid धीरे धीरे कम होकर पूरा साइड में जा रहा है. That means the remedy is right, and I am repeating that LM potency in my practice. Huangnang, Hoangnang. 6 months infant vomiting continuously, sir. Doctor suggested appendectomy and lat procedure. After operation, there is no change or symptoms, sir. Child continuously striking head. See, a 6 month old, a 6 month old child suffering from vomiting. Now see, सबसे पहले तो I am very much surprised that the child is not better with after the operation of appendicitis also. So in this case, there is very very important remedy. You can think about 3 remedies which have got very very good results, Dr. Akil. First, phosphorus सोच लीजिए आप. सेकेंड सोच लीजिए कार्सोनिसिन. थर्ड सोच लीजिए पल्सेटिला. और एक फोर्थ रेमेडी, वो बावल नोसोडा डॉक्टर साहब, उसके अंदर ध्यान रखिए बैसिलस डिसेंट्री का. ये रेमेडी को ऑल्सो बोलते हैं डिसेंट्री बैसिलस. बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, एंड दिस रेमेडी हैज गिवन मी वेरी गुड रिजल्ट. एक सिर्फ पेशेंट मुझे याद आ रहा है, एक बच्चा था, सडन वॉमिट करता था, कुछ भी कहा सडन वॉमिट, and that in that case I use the remedy zincum oxidatum. Zincum ZINCUM oxidatum OXYDATUM. So ये बहुत इंपॉर्टेंट था प्रिस्क्राइब करने के लिए. जिंकम ऑक्सीडेटम आई यूज ओनली 30 पोटेंसी इन रिपीटेशन. कफ प्रॉब्लम, लाइंग डाउन ऑन लेफ्ट साइड, आई फील विजिंग साउंड ऑन माई थ्रोट. दो तो रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर नजीर. एक है हायोसैमस, दूसरा है पल्सेटिला, तीसरा है फॉस्फोरस. ये रेमेडीज बहुत इम्पोर्टेंट. वन ऑफ द रेमेडी यू कैन प्रिस्क्राइब, डोंट प्रिस्क्राइब ऑल द 3 रेमेडीज. ओके. Yes, Dr. Ital, thank you. I would like to again read that LM potency. That is very very important. So there is any remedy for alcohol withdrawal and its side effects? See, for side effects there are a lot of remedies. It is basically symptomatic. अल्कोहल विड्रॉल के लिए होम्योपैथी में बहुत रेमेडीज है. आप देखेंगे स्टेफिसेग्रिया है, कैलेडियम है, बट मेरे को सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिला है क्वेरिकस. राइट डाउन द नेम ऑफ क्वेरिकस इन मदर टिंचर आई हैव गिवन, विच हैज गिवन मी गुड रिजल्ट्स. ऑफ कोर्स कैलेडियम, स्टेफिसेग्रिया भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है. स्पेशली अगर पेशेंट, इफ द पेशेंट कम्स एंड टेल्स यू दैट I had lot of desire in life, lot of things in life, but because
I was not able to speak. मैं बोल नहीं पाता था, मैं जा नहीं पाता था. That's why I basically had the habit of drinking alcohol, and now I'm become alcoholic. Then in that case, Tephisagria works very well. Or for example, if the patient says, I have tried so much in life, I have done this business, that business, I was only successful partly, that's why I have to change the business. If that is the case, then you must think about Nakstomika. कोई भी डीप एक्टिंग रेमेडी क्रॉनिक डिजीज में कितने टाइम तक देनी चाहिए? वेरी वेरी सिंपल डॉक्टर मयूर. Whenever you have taken the case, first give the remedy single dose and wait for the reaction. आपकी बॉडी, आपका वाइटल फोर्स कैसा काम कर रहा है दवाई का. अगर आपको लग रहा है वाइटल फोर्स बराबर काम कर रहा है तो वेट करिए. केंट के हिसाब से कोई भी रेमेडी हम 2 बार रिपीट करना चाहिए बिफोर इन गोइंग टू द हायर पोटेंसी. वो 1 महीने के बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, और 1 साल के बाद भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट. बट every remedy you can repeat twice, and when the remedy has exhausted its action, you can definitely shift to the 1M potency, as Dr. Kent says. Hahnemann साहब क्या बोलते हैं? अभी सेंटिव सेलुलर पोटेंसी में क्या होता है? पहले एग्रेवेशन आता है, फिर एमुलरेशन आता है. और 50 मिलीसीमल पोटेंसी में पहले एमुलरेशन आता है, एंड व्हेन द एग्रेवेशन स्टार्ट्स, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टेपरिंग द एलएम पोटेंसी. दिस इज इंपॉर्टेंट. बबल नोसो स्पेशली अबाउट कार्सिनोसिन. ओके यू, मैं सबसे ये बोलना चाहता हूँ, आजकल तो मेरे यूट्यूब लाइव में काफ़ी लोग ज़्यादा ज्वाइन करते हैं. पहले मेरे पास 80-90 लोग आते थे. अभी लास्ट टाइम हमने देखा कि कम से कम 500 लोग थे. 596 पीपल वर देयर इन द यूट्यूब. और व्हेन आई वेंट टू दिल्ली फॉर द कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटिंग द केस, मुझे ऐसे ऐसे डॉक्टर्स मिले जिन्होंने मुझे बोला कि सर हमने आपका यूट्यूब देखा है, मुझे भी नहीं पता था. सो आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया कि समटाइम्स यू गो समवेयर and you find that a lot of people know you because of the interaction we do with the public. So thank you all who were there in the seminar and those who have attended my lecture. It was nice meeting you also. So this is how we normally in today's world meet friends on YouTube or Instagram, and suddenly you feel that somebody has got relief with your whatever you have told. So whenever if you give this remedy, dysentery or carcinosin, and if you get result, Dr. Akil, make sure that you share your experience so that everybody learns. I also feel happy. Yeah, Dr. Prasad, thank you. Dr. Akil, thank you. So जब भी आपको लगता है कि मेरे कोई क्वेश्चन भूल गया, बिकॉज पूरा स्क्रॉल अप हो जाता है, सो यू कैन ऑलवेज रिपीट, राइट योर क्वेश्चन अगेन. सर बॉल, what is the role of bacillin in asthma? See, if you ask me what is the role of bacillinum in asthma, my basic answer would be, bacillinum is a nosort of tuberculosis. Now, how do we prescribe bacillinum? That is very important, first of all. Now, whenever you want to think of bacillinum, there are, if you read, bacillinum from Kent's Clark Mater Medica, he said that the remedy has been largely used in infrequent doses. That is very important. And of course, symptomatically, if you read any nosort, for example, Sorainum from Allen's keynote, simple, उसमें लिखा है कि भाई this remedy should be prescribed on strictly constitutional basis rather than prescribing for like a nosort. सिंपल मैं बोलना चाहूँगा कि बैसिलिनम भी सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के हिसाब से प्रिस्क्राइब कीजिए. बट whenever if you have a case of asthma and the patient is now settled, but the cure is not going further, you can give a dose of bacillinum, especially in cases where there is strong history of tuberculosis in the family, strong history of chronic bronchitis in the family, strong history of COPD in the family. Then you have to think or open the case with bacillinum, which I do in my practice. Of course, if you see the Mater Medica, there are a lot of symptoms of bacillinum. अगर आपको bacillinum constitutional medicine देना है, you can give. But in the cases which are stuck up, then I use bacillinum in this type of cases. Please get the treatment about tinea capitis. Yeah, so Dr. Bari, बहुत अच्छा question है. और even if you ask me, very very irritating, because tinea capitis, tinea cruris, ringworm, fungus in the skin, sometimes some cases they resolve very well, but definitely some cases को बहुत टाइम लगता है ठीक होने के लिए. मेरे साथ भी ऐसा होता है.
Whenever your immunity is low, that's why we get fungus, we get virus, we get ringworm, we get tinea infection. Ask the patient or understand in case taking when the immunity of the patient has gone down, and in that case आप प्रिस्क्राइब करेंगे वो पॉइंट पे तो आपको बहुत अच्छा क्यूरेटिव रिजल्ट मिलेगा. There are some remedies which basically are very very if you give in LM potency repetition वो अपने आप दवाई से कम हो जाता है. That is thuja, silicea, acid chryso, एजेटेरिक्टा इंडिगा और इचनीशिया. ओके, सो हम आगे जाएंगे. जो भी क्वेश्चन मैं शायद भूल गया हूं आप मुझे फिर से लिखेंगे, बिकॉज बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम एंड आई एम नॉट एबल टू see the question, they are scrolled up, so you can always write again. I was just telling you something about बैसिलिनम. तो बैसिलिनम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिम्टम है. द पेशेंट हैज गेट्स फ्राइटेंड वेरी इजीली, स्पेशली बाय डॉग्स. डॉग से पेशेंट बहुत जल्दी घबरा जाता है, डर जाता है, एंड दैट इज बैसिलिनम. सो यू कैन राइट डाउन इन योर मैटरमेटिका. एंड बैसिलिनम के अंदर इतना ज़्यादा टैसिडिटी, सल्कीनेस, स्नैपिशनेस, इरिटेबिलिटी रहती है, and so much so that the patient can land up even to insanity. That is basilinum. Okay, so please do go home and read basilinum from Clark Matermedica. Of course you can read whatever book of choice you have, but normally I have read basilinum from Clark Matermedica. Bowel nosode, of course bowel nosode, whatever experiences I have, of course I have a very sporadic and very little experience of using bowel nosode, but whenever I have used bowel nosode, it has given me very very good results. I told you something about that vomiting, and I used that dysenterico bacillus in my practice, and I have definitely got very good results with that. So some sporadic and but very very good results with bowel nosodes. And nowadays if you have seen LM potencies, normally LM potencies works very well. So bowel nosode basically I have so much I am not using it, but few bowel nosodes which are very very common, which I have used and I have got very good good results, like dysenteric and all. For example, there was one case where the patient was fatigued because of lot of strain, stress of life, and nothing was working. So I prescribed this dysenteric remedies which worked very well. So sometimes in the repertory chart dysenteric or bowel nosode does not come. So it is when the remedy which comes in the chart and the remedy fails, then you start treating the symptoms, you start treating Buttermedica, and then you can have bowel nosode. Like Proteus back I use, Bacillus dysentery I use. These are the remedies which I use frequently, and which, in repetition I have got good results. Can we prescribe silicea in patients with implant and something when it's common? Yeah, definitely. You can prescribe. ऐसा कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर मयूर के आपने सिलिशिया दिया और इम्प्लांट बाहर आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. सो यू कैन डेफिनेटली गिव सिलिशिया एंड देयर इज नो प्रॉब्लम. बहुत बार पीपल आल्सो आस्क मी दैट कैन यू गिव पल्सेटिला इन प्रेग्नेंट वुमन. Of course, if the symptom corresponds, if whatever symptomatically, if you're taking the case and you've got it, pulsatilla will definitely not cause abortion. So you can definitely give pulsatilla. In homeopathy, basically, I've never seen this type of things happening in a practice. You can definitely give silicea or pulsatilla if the remedy is indicated and symptomatically also. Yeah, thank you, Dr. Mayur. And whenever if you get results, do share your results. I keep telling you because I also learn when I'm teaching also. So let us go forward. Please write down. I would just have one case where I had used a very different remedy. I had a case where in a child, just that question. I had a case in a child where he had chronic vomiting. He had taken a lot of homeopathy medicine with lot of good doctors. I also had failed in that case. And then when I was reading Matermedica, I had a remedy called as amygdala. Amygdala. Now this is the only remedy where it is written that vomiting in children which is very chronic. Amygdala, and amygdala I prescribed, and that gave me a very good results. So these are some uncommon remedy which we prescribe or I prescribe when our common remedies have failed.
So exact mathematica we will not understand, but symptomatically, if you get the symptom, you can always prescribe amygdala, chronic vomiting. Yes, lot of new doctors, today, and lot of new remedies also, which I am telling you. So whenever new doctors join in and ask questions, I'm very happy because the reach of my YouTube or Instagram is now increasing. So I'm also very happy that every आपको समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप दीजिए, बिकॉज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के अंदर पता ही नहीं पड़ता कि आगे वाला क्या कर रहा है. ऑफलाइन के अंदर तो हमको पता पड़ता है कि कोई सो रहा है, कोई उबासी ले रहा है, उसको इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट नहीं है. बट ऑनलाइन में क्या है, मुझे पता नहीं पड़ता है. सो इट बिकम्स वेरी वेरी समटाइम्स वन टू वन. आई एम सीइंग माई फेस एंड आई एम टॉकिंग टू यू. सो समटाइम्स ऐसे लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. सो जब भी आपको सब ठीक लगे, थम्स अप दे दीजिए. सो आई नो दैट एवरीबडी इज एंजॉइंग इन any person on the YouTube which I met in Delhi conference, you can always write, so I know that I have met you. इसके आगे बढ़ेंगे. आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए सब? ओके, इफ द क्वेश्चंस आर ओवर, there was one also, can we give chili remedies for hot patient if all symptoms are matching? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मुझे दिल्ली कॉन्फ्रेंस में भी एक स्टूडेंट ने पूछा था. सी, होम्योपैथी के अंदर देर आर वेरियस अप्रोचेस. देर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस, मायास्मेटिक ट्रीटमेंट, acute treatment, mixed pathy, starting with 6 potency. Sometimes people start with 10 potency. Some look at only mind symptoms, some look at this symptom, and everybody has got good results. if your remedy is absolutely right, if your सब मायास्मेटिक, अगर आपने अपने पास सिफिलिटिक डिजीज करके पेशेंट है, आपने सिफिलिटिक रेमेडी उसको प्रिस्क्राइब की है ऑन सिफिलिटिक सिम्टम, देन यू कैन प्रिस्क्राइब, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ हॉट एंड चिली. लेकिन अगर पेशेंट ऑफ कैंसर आपके पास आया है, देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, देन यू कैन स्किप द थर्मल्स बिकॉज ऑफ द थर्मोस्टेट इज डिस्टर्ब. For example, if the patient of hypothyroidism comes to you, diabetes comes to you, metabolic disorders comes to you, in these cases the thermostat is disturbed. So if your remedy is symptomatically, you are getting a remedy which is not hot, but your patient is hot, you can definitely prescribe and you will definitely get good results. Good afternoon, Dr. Paul. I hope I am very clear, and this has happened in my practice also. So actually today I have some problem in the throat. I'm clearing the throat, and whenever you have this type of symptom, again vomiting when clearing up the throat, now normally we never think about this remedy, but euphrasia is the remedy whenever you have problem of vomiting when you clear or ulti aati patient ko. So whenever there is problem of vomiting when clearing up the throat, you can think about euphrasia, because normally we never think about euphrasia except eye symptom, but it is there. One more remedy you can write down: vomiting while clearing the throat. The remedy is also bryonia. So you have to think about euphrasia and you have to think about bryonia. I hope I'm very clear. And of course then vomiting after eating, lot of remedies are there. Dr. Bharti Das, good afternoon. Corona is coming soon around us. Please suggest prevention. अगर कोरोना आ रहा है तो उसको आने दीजिए, जब वो आएगा तब हम देखेंगे. क्योंकि अभी ऐसे लोग बोल रहे हैं कि कोरोना सिम्टम बदल के आ रहा है, तो जब सिम्टम बदल के आएगा तो फिर हम भी उसको बताएंगे क्या होम्योपैथी रेमेडी है. उसको आने तो दीजिए पहले, उसके फिक्र मत कीजिए. जब वो कोरोना का फेज हमने होम्योपैथी में इतने अच्छे ट्रीटमेंट दिए, तो अभी जो भी कोरोना आएगा उसको हम तैयार है. प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव इसलिए मैं बता नहीं सकता बिकॉज अभी कोई पेशेंट मैंने देखा नहीं है, और देखा भी है तो बहुत स्पोरेटिकली देखा है और वो ठीक हो जाते हैं. सो वेरेवर यू आर प्रिस्क्राइबिंग अ जीनस हेपेटिकमस, यू हैव द पॉपुलेशन ऑफ द पेशेंट शुड बी लार्ज सो दैट वी कैन टेक आउट अ जीनस हेपेटिकमस और अ प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट. सो जब भी आएगा डॉक्टर साहब हम देखेंगे उसको और हम आपको बताएंगे उस टाइम क्या देना है. अभी तो फिलहाल इतने केसेस नहीं है हमारे यहाँ, इंडिया में भी इतने केसेस नहीं है, बट बी रेस्ट एश्योर्ड जब भी आएंगे हम उसको ठीक करने वाले. ओके, let us go further. So some doctors have joined on the 29th minute. We have only 1 minute left, so I hope everybody joins in early so that the discussion is very healthy. Any other question you have, or I will
Today only I had a very interesting case of acute renal failure anuria. The patient came and the patient is much better. Yeah, Dr. Babal, thank you very much, and Merry Christmas to you, your family, and season's greeting to you. I hope you all make a small group and come to India, and we'll discuss and India, and I'll be very happy to share my life cases in front of you. Today I'm sharing on presentations and social media, but when you come and sit in my chamber, and if you see patients, I'll be happy in sharing my knowledge with you. Thank you so much, and everybody, Merry Christmas. We are through with the 30 minutes, so everyone, thank you for joining, and thank you. I hope you enjoyed it as much as I enjoyed sharing knowledge with you. Thank you so much. Until next Saturday, bye for now.